Okay, yes, hello Amit. Welcome on YourPedia platform. And Thank you, let's sir. start your heat transfer snap for your BPSC interview for the post of lecturer. Yes, sir. Amit, what is heat transfer? Sir, what is heat transfer? Sir, in thermodynamics or in case of heat transfer? अलग अलग होता In है thermodynamics, the heat नहीं heat no sir, अलग-अलग नहीं होता है sir. Heat transfer only sir, it is a type of energy transfer in which is occurs due to the temperature difference only. Heat transfer. Okay, why we are adding that word transfer? What do you understand by heat? Why not heat only? Why we are saying heat transfer? Because sir, it is a tangent form of energy. Because it from the system crosses from the boundary from system to surrounding or surrounding to system. That's why it's called. So it is when energy is available in the body, in what form it will be there? In the form of internal energy, I think so. Internal energy. Yes. Okay. So, what are the different modes of heat transfer? Can you give me some physical, some kind of mechanism? Can you describe how the conduction takes place in solids? Sir, conduction in solids, conduction takes place by the molecular transformation energy transfer or due to the free electrons. Conductivity of metals decreases with the increase in temperature. Yes, sir. What is the reason behind that? Sir, because sir, when we increase the temperature in case of metal, the readiness of the molecules is going to increase, which decrease the mean free path between the molecules, which adapt the motion of the free electrons. That's why when we increase the thermal conductivity, temperature is going. When we increase the temperature, thermal conductivity is going to decrease for a metal. What are fins? What are the use of fins and how we define effectiveness of fin? Yeah, the fins is extended surface which is used to increase the heat transfer rate by increasing the surface area. And effectiveness is the ratio of the heat transfer with fin to the heat transfer without a fin. So what you will do to improve the effectiveness of fins? How we can improve the effectiveness of fins? Yeah, sir, we are using the fin towards a lower heat transfer coefficient, or using the higher thermal conductivity material, or thin fin can be used so that more number of fin can be accommodated. Good. अब मेरे को ये बताओ, आपने रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर सुना है? Yes, sir. So how the heat transfer takes place in regenerative heat exchanger? Sir, in this regenerative heat type of exchanger, alternately hot or cold fluid is passed. Let's suppose when hot fluid is passed through, and there are number of matrix in the regenerative type of heat exchanger, which extract the heat from the hot fluid, and after that we have to transfer the cold fluid, which added मतलब सर वो जो cold fluid है वो heat को attract कर लेता है from the matrix which is given earlier by the hot fluid. This type. आज आपने पेरेंटल बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ा होगा? Yeah, sure, sir. तो कुछ बताएं इसके बारे में. What is that पेरेंटल बाउंड्री लेयर थ्योरी? Sir, it is a thin region inside which there is a velocity gradient over the flat plate. कैसे होता है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन? कैसे होता है? Can you explain that? Yeah, sir, due to the momentum diffusion. Yeah, sir, due to the momentum diffusion rate. Momentum between the fluid, momentum diffusion between the fluid and the solid body. अच्छा, Reynolds experiment क्या था? What's the purpose? What is the use of that Reynolds experiment? Reynolds experiment. Sir, Reynolds analogy. Yeah, Reynolds experiment. Reynolds experiment is famous. It is also known as inkjet experiment. Sorry sir, अभी मुझे याद नहीं है. अच्छा, Reynolds analogy आपने पढ़ा है? Yeah, sir, sure. बताओ क्या है Reynolds analogy? क्या है? एक तो सर Reynolds analogy है, एक है modified Reynolds analogy.
तो ये जो रिनोड एनालॉजी यूज करते हैं सर टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड द स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। और जो रिनोड एनालॉजी मेनली फॉर जो पेरेंटल नंबर 1 होता है लाइक गैसेस इसके लिए यूज करते हैं, और जो मॉडिफाइड होता है उसका पेरेंटल मतलब कि ज्यादा रेंज पेरेंटल, जैसे फॉर एग्जांपल 0.6 to 60 अगर पेरेंटल नंबर उसके अंदर भी यूज करना है तो वो हम मॉडिफाइड का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ कि आपने इसमें एक अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर की जब हम बात करते हैं, यस सर। अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में एक लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस की हम बात करते हैं। व्हाट इज दैट लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस? Sir, in lumped parameter analysis, we are assuming that there will be a uniform temperature distribution throughout the body, and we neglect the temperature gradient within the body. So what are the bases, on what basis we can consider lumped parameter analysis is applicable? The bio, when biot number is less than 0.1, then it will apply. Yeah, why 0.1 biot number? Why not 0.2, 0.3? Because sir, as we know, there is the ratio from the biot number is the ratio of the conductive internal conductive resistance to the external convective resistance. It means that when the biot number is less than 0.1, it means the conductive internal conductive resistance will be neglected. It means that dt by dx is neglected. From that we can compare that. Hasler charts का क्या यूज है? Yes, sir, it is used when the internal conductive resistance is approaches to the external conductive resistance. तो अगर लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं है तो इन दैट केस वी नीड टू यूज हैजलर चार्ट्स। या श्योर। तो होता क्या है चार्ट्स में, क्या प्लॉट करते हैं? सर एमटेक में पढ़ा था लेकिन अभी ध्यान नहीं। चलिए तो आपने एमटेक थर्मल से किया है? या सर। तो कन्वेक्शन समझाओ कुछ। कन्वेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कन्वेक्शन? Sir, first of all, sir, convection is a mode of heat transfer which occurs generally between the solid body and the surrounding fluid due to the temperature difference by the macroscopic bulk motion of the fluid. अच्छा, suppose if you will take a bowl, metallic bowl, and if you will immerse that bowl in some oil to carry out some kind of quenching, Yes. तो वहां पे क्या होगा? कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा? एक bowl है which Yes, actually you have taken from the furnace and you immersed that hot spherical bowl in some oil. सर कंडक्शन होगा। कंडक्शन होगा, why? या सर क्योंकि सर ये बॉडी का टाइम के साथ सर ये टाइम के साथ ये बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा सर। तो टाइम के साथ अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो कंडक्शन होता है, वो तो अनस्टेडी स्टेट हीट होता है। नहीं सॉरी सर, हाँ सॉरी सर सॉरी। अनस्टेडी तो कंडक्शन में भी हो सकता है, कन्वेक्शन। या सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। सर मेरे हिसाब से कन्वेक्शन होगा सर। कन्वेक्शन होगा, कौन सा? फ्री, फोर्स्ड? फ्री होगा सर। फ्री कन्वेक्शन। यस सर। व्हाई फ्री? बॉइंसी फोर्स क्योंकि उसमें कोई करेंगे सर, बॉइंसी फोर्स एक्ट करेगा उसके ऊपर, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो डेंसिटी इस केस में अगर आपको एच वैल्यू निकालना है तो हाउ यू विल प्रोसीड टू फाइंड एच आउट द वैल्यू एच निकालना। वैल्यू? यस कन्वेक्शन सर। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। सर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। कन्वेक्शन उसे हीट हम ट्रांसफर एच। कोएफिशिएंट इक्वल टू डिक्रीज इन एनर्जी। यस सर। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर या क्यू कन्वेक्शन? क्यू कन्वेक्शन मतलब सर क्यू कन्वेक्शन, एच ए इनटू चेंज इन टेम्परेचर एच ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर, एंड दिस विल इक्वल टू एम सीपी इनटू डीटी बाय डीटा। इक्वेट करेंगे यहाँ से एच फाइंड आउट कर सकते, इंटीग्रेट एच करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? इंटीग्रेट करेंगे।
तो जो इक्वेशन आती है हमारे पास, उस इक्वेशन से आप एच निकालोगे। श्योर सर। हाँ तो मेजर क्या क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे सर। क्या क्या मेजर करोगे आप? हाँ हाँ सर। हाँ सर, एरिया ऑफ द बॉल हम मेजर करेंगे, वॉल्यूम और सीपी, मतलब स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी और टेम्परेचर नहीं टाइम जो। मेजर करोगे? टेम्परेचर नहीं मेजर हाँ करोगे? हाँ, चेंजिंग टेम्परेचर तो रहेगा ही सर, जो हम्म। हमारा इनिशियल है और फिर फाइनल, मतलब टाइम, एटमॉस्फेरिक। टाइम नहीं हाँ मेजर टाइम। करोगे? हाँ सर, टाइम भी ओके। मेजर करेंगे। हाँ सर, टाइम भी। अच्छा, ग्रेशोफ नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है हीट ट्रांसफर में? सर, ग्रेसोव नंबर सिंपली रिप्लेसेस द रेनॉल्ड नंबर इन केस ऑफ द फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। Prandtl number, if it is greater than 1, then which bound यस layer thickness will be more? Hydrodynamic bound layer or thermal bound layer? And why? सर, हाइड्रोडायनामिक बॉन्ड लेयर। Prandtl number is greater than 1. Why? बिकॉज सर फ्रॉम फार्मूला वी कैन से दैट। फार्मूला से बता सकते हैं, वैसे नहीं यस समझा सर। सकते आप? जस्ट हाँ टेल मी, वैसे भी गिव मी समझ। सम फिजिकल हाँ इंटरप्रिटेशन। हाँ, ये भी है सर कि जैसे कि ये बता रहा है कि पेंटल नंबर ग्रेटर देन इट मींस दैट मोमेंटम डिफ्यूजन इट डोमिनेट्स ओवर द हीट डिफ्यूजन। हम्म। तो किस तो तरह यहाँ के से फ्लूइड्स के लिए Prandtl नंबर 1 से ज्यादा होता है? फॉर वाटर इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? फॉर वाटर इट इज ग्रेटर देन 1 सर, 6 to 13 आई थिंक सो। चलो ठीक है, ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अमित। अमित, यस मेरे को बताओ आपकी आपने प्लैंक्स लॉ सुना होगा, हीट ट्रांसफर में हाँ पढ़ा सर। होगा, तो यस प्लैंक्स सर, लॉ के यस बारे में बताओ, व्हाट इज दैट प्लैंक्स लॉ? प्लैंक्स लॉ। सर, प्लैंक्स लॉ states that the monochromatic emissive power of the black body is dependent upon the absolute temperature of the black body and also dependent upon the wavelength of the radiation energy emitted. तो प्लॉट कर सकते हो? कैन यू गिव मी ए प्लॉट फॉर बिटवीन ई लैम्डा, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, फॉर ए Yes, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी एंड ए रियल बॉडी? yes, sir, sure. हाँ हाँ हाँ, दिखाओ। So is it, हम्म। तो ब्लैक ग्रे रियल बॉडी के लिए कैसा मिलेगा? so उसके बीच में मिलेगा सर, और अच्छा, ये थोड़ा जो ये। ग्रे बॉडी का आपने बताया, इट द शेप ऑफ द कर्व इज वेरी मच सिमिलर टू ब्लैक बॉडी, ऐसा क्यों? कर्व आपने बिल्कुल सही बनाया है। I हम्म। only want to know why actually you have drawn a similar kind of shape for black and gray body. सर अभी याद, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, आपने कोई लैब विजिट किया है हीट ट्रांसफर का? हाँ सर। कोई 3 एक्सपेरिमेंट बता सकते हो जो आपने उस लैब में देखे हो, बेसिक जो बीटेक लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे हीट ट्रांसफर लैब्स में रहते हैं? हाँ सर, सबसे बेसिक तो हमने ये थर्मल कंडक्टिविटी से फाइंड आउट किया हुआ है। हम्म। हाँ, उसके बाद, हाँ उसके बाद सर ये, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ या सर श्योर, हाँ हाँ स्टीफन बॉल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी। हम्म। और हाँ सर। क्या सर? वो आलोक सर। हाँ सर। हम्म। और सर एच में फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किए थे सर। चलो ठीक है, ठीक है।
अमित, वैसे तो देखो आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक लग रहा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आंसर। दो तीन चीजें जो आप मिस कर गए, एक तो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि लैमिनार से टर्बुलेंट का कन्वर्जन कब हो रहा है। तो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही वी गोट दैट रेनॉल्ड्स नंबर, कि if Reynolds number is less than 2000 the flow will be laminar in pipe, and if it is more than 4000 the flow will be turbulent in a pipe. तो वो रेनॉल्ड्स इंकजेट एक्सपेरिमेंट ही था, ठीक है। बाउंड लेयर थ्योरी नहीं बताया आपने, हाउ बाउंड लेयर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। बहुत स्पेसिफिक आप बता रहे हो, ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, because Yes, you are sure, not sir. going for some PSU, you are going for some teaching position. They, I think they can expect some more detailed answer from you. ठीक है, तो this time Sir, I have not asked you, but they can even ask you to stand in front of board and to explain how the bound layer formation takes place. I haven't revised fluid mechanics till now. That's why. नहीं वैसे ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग मेरे को ठीक लगा, बट थोड़ा सा आप हेजिटेट कर रहे थे, बहुत स्पेसिफिक आंसर आप दे रहे थे, वो ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स गुड एक्चुअली। बट कई बार आपने को थोड़ा सा जिस पॉइंट पे मैंने आपसे जैसे हाईलाइट किया, स्पेशली सपोज इफ इंटरव्यू इज हाईलाइटिंग टू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल, तो वो तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। Yes, sir. कन्वेक्शन ही होगा जब हम बॉल को ऑयल में इमर्ज कर रहे हो, दैट विल बी Yes, कन्वेक्शन, sir. कंडक्शन नहीं Yes, होगा, sir. एंड दैट विल बी फ्री कन्वेक्शन। Yes. ग्रे बॉडी का तो डेफिनेशन ही ये, व्हाट इज ग्रे बॉडी, व्हिच इज हैविंग कांस्टेंट द Monochromatic स्पेक्ट्रल emissivity. emissivity is independent of the wavelength. Yes, sir. स्पेक्ट्रल emissivity is equal to the emissivity, ना। Yes. तो Yeah. क्या होगा, तो Yes, yes, sir. जो पैटर्न है, बिकॉज जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी तो द कर्व फॉर ग्रे बॉडी विल गो इन द सिमिलर मैनर, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग इट लाइक दैट, ठीक है। Yes. सो दैट वी विल हैव ए कर्व वेरी मच सिमिलर टू ब्लैक बॉडी, बट द कर्व विल बी स्लाइटली क्लोजर टू द रियल बॉडी, because Yes. real surface are not going to behave like black surface, so real curve will be much closer to the gray surface, gray curve, gray surface curve as compared to black surface curve. Yes, sir. चलो मेरे ख्याल से ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है, थोड़ा सा और इसको रिवाइज कर लोगे तो आई फील इन ए वेरी बेटर मैनर, गुड मैनर यू विल बी एबल टू हाईलाइट, ठीक Yeah, है। that's sure. अंडरस्टैंडिंग Sure, आपका sir. ठीक है, और आपका वे ऑफ स्टाइल इज लुकिंग फाइन, देयर इज नो इशू, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, Okay. Okay. ठीक है। मैं गुड लक, और थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट देख के जाओ, बिकॉज आई फील कि जब आप लेक्चरर वगैरह के लिए जाते हो ना, तो देख लेते हैं वो आप एक्सपेरिमेंट्स करवाओगे नहीं करवाओगे, आपको पता भी है कि नहीं है थोड़ा सा। Yes, तो sir. डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं हीट ट्रांसफर लैब में, तो थोड़ा सा देख के रखो और कॉन्फिडेंटली बताओ कि सर मैं आई एम इनटू सम टीचिंग ओनली एंड आई परफॉर्म सच काइंड ऑफ ड्यूटीज, I teach that particular subject, I have taught that subject, and even I help, I perform some experiments in the heat transfer lab also, and you can mention some of the experiments, ठीक है। Yeah, sir. Sure. 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 चलिए, गुड लक अमित, बेस्ट लक फॉर इंटरव्यू। Thank you, sir. Thank you.